सबसे पहले तो आपका वेलकम यहाँ पे। और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि स्किल हब ऑनलाइन गेम फेडरेशन से आप कैसे जुड़े और आपका क्या इंटरेस्ट था इसमें? देखिए, पहली बात तो इंटरेस्ट अगर आप कहें तो माइंड स्पोर्ट्स सिर्फ इसमें नहीं, हम क्रिकेट में भी हम आपको खेलना होता है, दिमाग यूज करना होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि जो मूव्स होते हैं कभी चेस में आप वो मूव करते हो, वही मूव आपको क्रिकेट में भी करने होते हैं, अपोजिशन को बिना बताए, उनको बिना पता चले। बहुत बार ऐसे होता है कि आप अंदर से नर्वस हो लेकिन आपको दिखाना नहीं होता है कि आप नर्वस हो। तो आई थिंक ये गेम ये सिचुएशन हम क्रिकेट फील्ड पे हम गए हैं इस सिचुएशन से, तो हमें पता है कि ऑनलाइन चेस गेम है या जो भी माइंड स्पोर्ट्स है उसमें कैसे आपको माइंड काम रखना होता है। उसके लिए स्किल की जरूरत होती है, स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है, वो सिमिलर है कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है हर एक चीज से। जब ये अपॉर्चुनिटी आई तो मुझे लगा कि ये एक फ्यूचर है हमारे लिए, और अगर इसको मैं सही तरीके से प्रमोट कर सकता हूँ तो वाई नॉट। Personally, have you implemented any of these like mind games into your leadership style or your playing style for that matter? मेनी टाइम्स आपको करना होता है। अगर आप नहीं भी करते हो तो आपको ये सीखना होता है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितने साल से क्रिकेट खेलता हूँ बहुत कुछ सीखने मिला है। बहुत लोगों को ऑब्जर्व करते हुए आप उनसे सीखते हो कि वो हर सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। तो आपको ये ट्रिक्स क्रिकेट फील्ड पे भी यूज करनी होती है। यूज की है बहुत बार, बट उसका जरूरी नहीं है कि जो सक्सेस रेशियो है हमेशा हाई होता है, कभी कभी फेलियर्स भी आता है, बट ये चीज से आपको हमेशा से गुजरना पड़ता है। Ajinkya, you yourself, do you play chess? Frankly, no. And you drew a very good parallel between cricket and chess because the moves you make on it, court, like sometimes you have to in chess you have to sacrifice a piece to gain something. Yeah. So this is something I'm sure you would be able to. I think, frankly, I'll be a better chess player. Once I start playing, but अभी तक बहुत कम खेला हूँ, मतलब बचपन में खेला करता था, बट क्रिकेट कंसिस्टेंटली जब से हम खेलने लगे हैं वी डोंट गेट टाइम। एज यू मेंशन, क्रिकेट में हमेशा से वो मूव्स खेलने होते हैं, कभी कभी किसी प्लेयर को सैक्रिफाइस करना होता है, कोई पोजीशन, किसी प्लेयर का पोजीशन सैक्रिफाइस करना होता है। अगर आप प्रेशर में भी हो तो अपोजिशन को आप दिखा नहीं सकते कि आप प्रेशर में हो। बहुत बार वो पोकर फेस रखना होता है। तो आई थिंक बहुत सारी सिमिलैरिटीज है दोनों में, इसीलिए मैंने कहा कि आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी मिली मुझे इस स्पोर्ट से जुड़ने के लिए, तो मैं बहुत खुश हूँ। देखिए, ऑनलाइन गेम्स की बात की जाए तो जहाँ पर हमारे पेरेंट्स हमें बोलते थे कि आउटडोर जाया करो, आउटडोर खेला करो, वहीं पे आजकल जो है बच्चे जो है ऑनलाइन गेम्स में खेलने लगते हैं, जैसे पबजी हुआ और भी अलग अलग गेम्स। तो आप ऑनलाइन गेम से कब से जुड़े हुए थे और आपको क्या लगा कि कब ऑनलाइन गेम्स ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है आपको? देखिए सर, ऑनलाइन गेम से हम जुड़े हुए रहते हैं जब बस से हम ट्रैवल करते हैं, फ्लाइट्स में होते हैं, या जब क्रिकेट से बिल्कुल भी मतलब प्रैक्टिस नहीं है, मैच नहीं है, तभी हम जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन उसके अलावा बहुत कम समय मिलता है फ्रैंकली स्पीकिंग ऑनलाइन गेम खेलने के लिए। बट होटल से हम एयरपोर्ट जा रहे हैं या एयरपोर्ट से कहीं और जा रहे हैं, कई कबार 1 घंटे की जर्नी होती है, तो वहां पर हम ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। तो इसी से हमारी शुरुआत हुई थी गेम्स खेलने के लिए। कहीं ना कहीं आपका माइंड भी ऑक्यूपाइड रहता है, आप ऐसे ही बैठे रहते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं। तो आपके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, अच्छे थॉट्स रखने के लिए ये गेम्स हम खेलते हैं। देखिए, आज जो है इंडिया भी सेमीफाइनल जीत गई है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, बहुत खुश हूँ। इंडिया सेमीफाइनल जीती है, ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल में आई है। पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ, और आई एम श्योर दे विल डू वेल इन द फाइनल्स। Beating Australia in a knockout game, ICC knockout game after a gap of 11 years, how different is it? How big is it for the team itself? Because we know what happened in 23 World Cup final, and then this. How big is this an occasion for the Indian team? I'm sure team must be thinking about जो पास्ट में हुआ है which is gone. Team must be thinking about the present, and उनका आज मकसद यही था कि ऑस्ट्रेलिया को हम हराए, सेमीफाइनल में और फाइनल में जाए। ऑब्वियसली जो पास्ट में हुआ था वो कहीं ना कहीं माइंड में प्ले करते रहता है, बट एज अ क्रिकेटर, एज अ प्लेयर, योर माइंड इज ऑलवेज इन द मोमेंट, ऑलवेज इन द प्रेजेंट, टू डू वेल इन दैट गेम and to win that match. So I'm happy that India won the match against Australia and they are into the finals now. And what's your opinion on this continuous criticism of the scheduling of the tournament, in the sense that people have been saying that India have kind of got it there, but at the same time you also have to go
go out every single day, perform and win the match. You have to play according to the situations, you have to apply yourself. So, is it fair, unfair? I mean, obviously it's unfair. What's your take on that? I'm here to talk about online sports. Let's stick to that. I mean, I have already answered about India winning the semi-finals, so I think let's stay there. Thank you. तो रोहित शर्मा को क्रिटिसाइज किया गया था, उनकी बॉडी शेमिंग की गई थी, उस पर क्या? As I said, let's talk about. around what we are doing and Yes, what thank you. वो आपको अकेले में मैं जवाब दूंगा. ठीक है, thank you. Now you're a new captain of KKR. So how the challenge is coming, because you guys are the last year's champion, but your team is looking very decent, and you have played KKR in past also. So how the team is shaped up, because you guys have done one small practice session in Mumbai, and you Yes. guys are having a practice in Calcutta just recent. So how you guys are shaping up, because of ऐसे तो महाकुंभ खत्म हो गया, अभी क्रिकेट का महाकुंभ है. First of all, I'm really honored, to be the captain of KKR team. I would like to thank the KKR management and everyone, owners and everyone, to giving me that responsibility as a captain. And as you mentioned, our team is really good. Everyone's playing really well. We had our camp just now in Mumbai. All the players were looking really good. All the domestic players were here, but all the international players, they are playing at this moment, which is a very good thing. Last year, as you mentioned, we won the championship. But again, this year it's all about starting from the scratch, starting from zero. And T20 is a funny format. IPL, we all know it's a challenging tournament. So, firstly, I'm really, as I mentioned, happy and humbled to be the captain of KKR team. But I think we would just like to keep it really simple, take one game at a time and staying in the moment, and basically enjoy this format. I think heartiest congratulations on being appointed the captain. You had a fabulous domestic season. The Mustaq Ali, you're in terrific form. So how do you, would you be carrying that form? How is it? How are you viewing the upcoming IPL for KKR as the captain? No, as I said, really happy to be the captain of KKR team. I'm really grateful and really humbled. And for me personally, batting wise, I'm doing really well. As you mentioned, Mustaq Ali was really good for me. Domestic season, I had a very good domestic season. So I'm really confident about myself. It's just about staying in the moment, staying calm, and just keep backing my game. Not to think too much ahead, and not to think too much about my past. It's always about the keep improving about my game, and just want to enjoy my game in this format. Yeah, Ajinkya, you keep on following other games as well. Now, D. Gukesh, the youngest world champion, according to you, what has it done for the world please, of chess? let's stick to the thing. One last piece. Yeah, do not go off track. This is about chess only, that's why I asked. One last question and then we can Sorry. wrap it up. One last piece. Just wanted to talk to you about your batting in particular. T20, in shorter format, is clicking. What is clicking? I mean, what are you working about in terms of your returns, in terms of number of runs you have scored? For me, personally, shorter format. See, I'm just looking to enjoy my game, The way I used to bat in my earlier days, I'm just, going back to that method. Previously, in between the franchisee which I played for, I mentioned this before, that my role was different in those franchisee. It was always about being an anchor and others will play around me. But last 2-3 years, it's always about playing with freedom, fearless cricket, and just go out there and back my game. I'm just trying to do that, but most importantly, it's always about the hard work, following my process, following my routines, and staying loyal and truthful to the game.